Hello friends, welcome to Birens Academy. I am Pramila. Today we will going to discuss about what is comedy and its type. So first, what is comedy? Came into being in ancient Greece. As a play, a comedy is a stage play of light, amazing, often satirical characters, chiefly representing a romantic or a realistic story with a happy ending. So what is comedy? It is came in ancient Greece, and here in comedy it is in a stage play the light, amazing, often satirical, that is characters chiefly representing the romantic or realistic pictures. Okay, that is the romantic and realistic picture, and always in comedy the ending is happy. That is known as comedy. Comedy କ'ଣ ଦେଖ ଏଇଟା ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରୀସରୁ ଆସିଥିଲା। କମେଡ଼ିରେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଆମେଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଥିବ, କିଛି ସାଟାରିକାଲ ଫିଗର୍ସ ଥିବ, ବା ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆଉ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ହ୍ୟାପି ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହିଁ ମିଳୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କମେଡ଼ି। ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ କମେଡ଼ି ୱାଜ୍ ରାଲ୍ଫ ରୋଷ୍ଟର ଡୋଷ୍ଟର ବାଇ ନିକୋଲାସ ଉଡଲା। ଓକେ, এটা মনে রাখিও, it is very much important. The first English comedy was Ralph Roister Doister by Nicholas Woodall. Okay, next we will move on to the types of comedy. See, in your syllabus you have, that is in unit 2 the comedy is there and some types of comedies are there. We will discuss which is there in the syllabus. So comedy may be divided into many parts, that is romantic comedy, the comedy of humor, the comedy of manners, comedy of error, sentimental comedy, mask, farce, and slapstick. Okay, so these are the types of comedy, but in your syllabus we have the romantic comedy, comedy of humor, and comedy of manner. We will going to discuss these three comedies in detail. Next, move on to the first one, that is romantic comedy. Romantic comedy is a subgenre of comedy in English drama. It was cultivated during Elizabethan age. Okay, please erase the end here. So the romantic comedy is a subgenre of comedy or in English drama, and it started in Elizabethan age. Okay, it started in Elizabethan age. It consists of love affairs between hero and heroine. Normally in a romantic comedies we will find the main theme, or it consists of the love affairs between the hero and heroine. Many complications and problems comes in the way of their love, but finally they come together or get married. In romantic comedy, what we will find, there is a love affairs between hero and heroine, and when they want to get married, they will face many kind of obstacles, and finally they get married. Understood? देखो रोमांटिक कॉमेडी कौन गोटे एमती लव स्टोरी होइथिबो जोथे कि हीरो और हीरोइन भितरे कौन लव अफेयर्स थिबो, आउ से माने जेतेबेले माने लास्ट को से माने चाहिबे जे बाहा हवा पे, सेतेबेले कौन होची बहुत गुडे ऑब्स्टैकल्स देकी से माने फेस करिके आसंती, लास्ट को तांकर बाहारटा हुए, सेटा होची हमर रोमांटिक कॉमेडी. अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल लेबा हमें जेमती एग्जांपल है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर. In this midsummer night's dream you will find many kinds of comedy. Okay, there is a comic scenes, and finally the drama ends with the ringing of a marriage bells. Understood? And like that, As You Like It, written by William Shakespeare, and Rosalind by Thomas Lord. These are the examples of romantic comedy. बुझिपारलो romantic comedy कौन? Then next we will move on to the comedy of humor. It was adopted and practiced by Ben Jonson. It deals with ordinary characters with four humors which governs individual temperament according to medieval theory. Okay, it is a very important concept, that is comedy of humor, and it adopted and practiced by whom? That is Ben Jonson. Okay, and here the character, the ordinary character who is representing
the comedy here. Okay, the comic character, he possessed of four humors. Normally human body possessed four kind of humors. गोटे मनीष बॉडी रे चारि प्रकार ह्यूमन ह्यूमर्स थाए बोली बेन जॉनसन करो मत. सी कौन कर माने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को से बहुत मात्रा रे राइटिंग्स रे लिखी थिले. आ जो चारिटा कौन अच्छी ह्यूमर आम बॉडी को कौन गवर्नस करे से चार्टा ह्यूमर को से डिस्क्राइब कर कौन. द फर्स्ट ह्यूमर, द ह्यूमर ऑफ ब्लड. ओके, ह्यूमर ऑफ ब्लड कौन, इट मेक्स ए मैन एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक. जदि ह्यूमर ऑफ ब्लड गोटे मनीष अधिक मात्रा रहिबो से लोक कौन हम एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक हो बुझीपार. माने सी सबू माने सबू सिचुएशंस को पॉजिटिवली नब. किसी भी आम नेगेटिव सिचुएशंस ताकू देबा स्टिल से सी पॉजिटिवनेस ही बाहर कर बुझीपार. पूरा ऑप्टिमिस्टिक मैन हो. सेमती फ्लेगमेटिक कौन, इट मेक्स एक्सेसिवली काम. ओके, फ्लेगमेटिक जदि थी गोटे बॉडी रे लोकटा कौन हम एक्सेसिवली काम माने नॉर्मल शांत स्वभावर लोकटा हो. देन हूँ कॉलरिक. कॉलरिक हूँ मेक्स ए मैन हाईली इल टेम्पर्ड. ओके, एठी लोक भितर माने कौन रागिबा नेचरटा मन क्रिएट हम, बहुत एक्सेसिव रागी भी हम, इल टेम्पर्ड हम, बिहेवियर भल नथिबो. एटा हूँ कॉलरिक बिहेवियर. देन मेलांकोली. मेलांकोली हूँ मेक्स ए मैन एक्सेसिवली मेलांकोली. एक्सेसिवली मेलांकोली कौन माने से टोटाली माने मोस्ट ऑफ द टाइम सी सैडनेस फील करतो, सैड रे रहउतो. बुझी पारलो, सेटा कहे आमे मेलांकोली होची हमरो सैडनेस. ओके, सो लोकटा बहुत कौन जदि एक्सेसिव क्रिएट है मेलांकोलीटा बॉडी रे तो सी सैड होकर रहउतो. एटा होची हमरो चारि टाइप रो हार्मोन्स बा ह्यूमर जोटा कि मनीष बॉडी रे क्रिएट होची. से कहउचनी जदि if you will find all these humors in a character, that comedy may be humoristic. Understood? केमिति humoristic होची जे बेन जॉनसन को द्वारा जे से मैन कौन हम टोटाली सैटारिकल पर्सन हो बुझी पार. सैटायर कर पाखे माने से क्वालिटीटा डेभलप हो. अंडरस्टूड? आम ये देख ह्यूमर आम ये फ्लैगमेटिक होची आमर माने हेल्दी शांति भावटा जोटा दब आमर फ्लैगमेटिक एक्सेसिव काम हो. कॉलरिक को आम कहवा येलो बाइल कहुए. कॉलरिक को कौन कहुए, येलो बाइल कहुए. येलो बाइल. ओके, कॉलरिक कौन येलो बाइल. सेमती आमर मेलांकोली को ब्लैक बाइल बोली कहुए. ओके, ब्लैक बाइल. Understood? Try to remember. The next we will move on to the comedy of manners. Comedy of manners कौन, manners माने जानथिबो जे manners कौन. Manners means mode, style, method, attitude, way of talking, behaving with others. These are the things we call the person is a these are the things we are calling it as a manners. बुझी पड़छो जे आपको आम मैनर्स कहूँ. नॉर्मली व्हेन ए पर्सन पोजेस दिस काइंड ऑफ क्वालिटी, दैट इज द स्टाइल, मेथड, द एटीट्यूड ऑफ टॉक, ओके, द बिहेवियर विथ अदर पीपल, वी आर कॉलिंग देम दैट इज द गुड मैनर पर्सन और बैड मैनर पर्सन. वी आर सेइंग लाइक दैट. सो द कॉमेडी ऑफ मैनर यूज्ड टू रिडिक्यूल द पीपल, especially it was satire on the elite class people and their lifestyle. What is comedy of manner? Comedy of manner कौन होइतला जे आमर माने आफ्टर 1660. ओके, एट द टाइम इंग्लैंड सो द एमरजेंसी ऑफ न्यू कॉमेडी. जो नुआ कॉमेडी इन्वेंशन से ए कॉमेडी ऑफ मैनर को आम आउ गोटे कहीपर रेस्टोरेशंस कॉमेडी कहीपर. कहीं से टाइम रे जो लोक मैंने रोते, ओके, जो मैंने हाई क्लास पीपल the characters taking the high class people's opinions, okay, and their viewpoints, their lifestyle and their dress up, by taking that things they made comedy with by taking that things. Understood? They made a humor by taking their qualities, their attitudes, their behavior, their lifestyle or their dress up. Understood? ताको हमें कहबे कोन comedy of manner.
माने कौन होता एटा को आम रेस्टोरेशंस कॉमेडी बोली कहवा आ रेस्टोरेशंस एरा रे कौन होता जे जो हाई क्लास पीपल माने थिले माने एलिट क्लास पीपल आम जोड़ा कहचे से टाइम रे तांकर बिहेवियर केमिति थिला तांकर लाइफस्टाइल आ तांकर ड्रेसअप ए सब को नहीं कि कैरेक्टर्स कौन करथुले ह्यूमरिस्टिक वे रे प्रेजेंट करथुले हैला तांको कॉमिक वे रे प्रेजेंट करथुले ताको आमे कहथुले कॉमेडी ऑफ मैनर्स बोली आउ एठी नॉर्मली कॉमेडी ऑफ मैनर्स रे आमे बेसी मात्रा देखिबा जे इमोरल टोन रे लिखा हिथिबो बुझि परलो जे इमोरल टोन रे थिबो कॉन्टेक्स्ट सब बळे कोन लव अफेयर्स ऊपर थिबो तबे इनफिडेलिटी इन लव एंड मैरिज माने कोन सेठे माने विश्वासघातकता चलथिबो लव अफेयर्स रे बा मैरिज रे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहउथुबो ताको आमे कहबा कॉमेडी ऑफ मैनर आउ एटा रेस्टोरेशन एरा रे बहुत मात्रा रे होतला सेथिपे लो क्लास पीपल माने कोन करथले जेतोल ह्यूमर करथले हाई क्लास पीपल को सोसाइटी को नहीं कि तांकर लाइफस्टाइल तांकर ड्रेसअप सब जिनस को नहीं कि से माने ह्यूमरिस्टिक वे रे प्रेजेंट करथले सेथिपे आमे कहबा ताको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर सॉरी कॉमेडी ऑफ मैनर ओके ताको आमे कहबा कॉमेडी ऑफ मैनर ह्यूमरिस्टिक वे रे प्रेजेंट करथले कॉमेडी को okay so we will discuss some examples that is All for Love by Dryden and The Way of the World by William Congreve these are the examples of comedy of manners बुझी पारलो सेमिति आमे comedy of humor रो किछि example नबा comedy of humor रो जेमति कि every man in his humor this is very important please try to note it down every man in his humor okay every man in his humor that is written by Ben Jonson and we can say take another example of Ben Jonson that is every man out of his humor okay every man out of his humor by Johnson okay this is also written by Ben Jonson like that as we have already discussed about that is romantic comedy that is As You Like It by William Shakespeare and Rosalind by Thomas Lodge and Midsummer Night's Dream by William Shakespeare okay so I hope you understood the concept of comedy and the types of comedy okay so if you have any kind of doubt you can ask me and thank you for the class